वेल डावोस डायरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। वेल हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यहाँ सीधे आपके लिए बहुत सारी इंडियन वॉइसेस लेकर आ रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त द टॉप इंडियन वॉइसेस मिस्टर T.V.Narendran, हु इज MD and CEO at Tata Steel and of course represents industry also. सर बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस टाइम इंडिया की प्रेजेंस ज़बरदस्त रही। आपने जितनी मीटिंग्स की, जितने लोगों से मिले, क्या वाइब है सर? तो एक बात जो आप बोल रहे हैं सही है। आई थिंक इंडिया इज डोमिनेटिंग डावोस दिस ईयर, बोथ फ्रॉम द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप प्रोमिनेंट में आई थिंक यू सी मोर इंडियन लेबल्स देन यू नॉर्मली सीन। दूसरा बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में भी इंडिया पर बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी इफ़ यू लुक एट इट जियोपॉलिटिकली पीपल आर ट्राइंग टू सी कैसे रशिया से या चाइना से वो डीकपल कर सकते हैं और अल्टरनेट सोर्सेस और डेस्टिनेशंस कैसे बन सकते हैं उनके सप्लाई चेन में। तो उसी स्थिति में इंडिया इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव कंट्री बोथ एज अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। और अभी जैसे मार्केटिंग हो रहा है इंडियन स्टेट्स का, आई थिंक इट्स वेरी गुड। It means more competition between states and more options for investors. True. So India is in a good light. सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स यहाँ हो। बट सर जो इंट्रिंसिक चैलेंजेस हम देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पर तो ऑफ कोर्स है ही, पर इंडिया की मैं बात करना चाहती हूँ। इन्फ्लेशन अब स्लोली हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, विच वॉज एक्सपेक्टेड, और उसकी वजह से अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है उसका असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ सकता है? एंड अगर आई मीन ऑफ कोर्स पड़ेगा, बट कितना ग्रेव होगा? क्योंकि डिमांड अभी तक तो अच्छी थी, बट वहाँ पर अगर एक पॉज आएगा तो प्रॉब्लम की बात है। तो एक बात यह है कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन आप देखिए तो इट इज़ इवन लोअर देन द इन्फ्लेशन इन सम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। आप यूके में इन्फ्लेशन देखिए या यूएस में इन्फ्लेशन देखिए, द इन्फ्लेशन इज हायर देन इंडिया। पर ये नहीं कि दैट इज़ नॉट अ कम्फर्ट इनफ, बट द पॉइंट इज इंडिया इज नॉट यूनिक इन इन्फ्लेशन। ऑल कंट्रीज आर गोइंग थ्रू दिस चैलेंज. I think both RBI and the Indian government has reacted quite swiftly to tame this, and hopefully उसका असर हम लोग ज़रूर देखेगा next few months में. I think actions that are being taken will help correct the situation. और दूसरा बात ये है कि अभी भी oil is quite stable at a higher level, but ये नहीं लग रहा कि it will increase even more. So I think to that extent, I think situation you think is in control? I think it can be put in control. Let me put it this way. The actions have started and let's wait for the results. Okay, fair enough. For Tata Steel sir, FY23 कैसा लग रहा है? हमने पिछले महीनों में और साल भर में जो मेटल की एक रैली देखी, बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में कमोडिटीज़ को लेकर, तो कैसे देख रहे हैं FY23 एज अ ईयर फॉर योर कंपनी सर? तो दो तीन चीज़ है। एक है कि फंडामेंटली द स्टील इंडस्ट्री इज़ इन अ मच बेटर प्लेस दैन इन द पास्ट। वो तो जब हम बोले थे पहले, अभी भी बोलेंगे। दूसरा बात यह है कि ऑब्वियसली व्हेन स्टील प्राइसेस गो अप एवरीवन हैज़ कंसर्न्स, एंड अभी जो गवर्नमेंट का एक्शन है ऑन एक्सपोर्ट टैक्स एक्सेट्रा हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। बट आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द इंडस्ट्री, उसका मतलब ये कि डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, ग्लोबली ट्रेड इज़ मोर अंडर कंट्रोल। ये नहीं कि चाइना बहुत एग्रेसिवली एक्सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। And I think the focus on infrastructure in India will make sure that the demand will continue to be strong. और इंडिया में सप्लाई चेन में भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, तो वेयर हाउसिंग और ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइंस। तो आई एम पॉजिटिव ऑफ द डिमांड. प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फ्लक्चुएट एंड रिफ्लेक्ट रेगुलेटरी एंड ट्रेड इश्यूज. ओके, बट स्टील प्राइस हाइक्स आपको लगता है और हैं इन द ऑफिंग? अभी तो बिकॉज ऑफ दिस लास्ट 3 days, इफ यू सीन देयर इज अ सॉफ्टनेस इन द मार्केट. वो तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ देयर हैज बीन सम सॉफ्टनेस, एंड आई थिंक दैट हैज गॉट a bit more exaggerated because of the export duty on steel. But the concern area for steel industry is more on the coking coal prices, which are still over $500. तो ये भी देखना है कि अगर steel prices drop, then the coking coal prices also have to drop. Otherwise, there will be pressure on the cost. एक्सपोर्ट्स पे जो सरकार ने रोक लगाई है, उसका असर कंपनी लाइक योर्स कैसा आप देख रहे हैं? The short term में we are used to dealing with volatility on prices. So I think that is something this is a, what do you call it? This is a hazard of the industry. So we deal with it. I think the larger issue is how long will this kind of export tax, if any, be there? Because fundamentally, I feel India should be a very big exporter of steel, because India has the iron ore, India has the ability to make good steel, and India has some of the latest steel plants in the world. So when you have a situation where China is exporting less, Japan and Korea is exporting despite not having raw materials, Russia and Ukraine are not exporting,
So it's a 100. But हमारी internal पहले requirements पूरी हो जाएं ये सोचा है. Because if you see the requirements in India even today, the demand is some 105 million tons. The production is some 120 million tons. So there is 15 million tons of extra production available in India, which can be exported. And I think Indian steel companies should build capacity keeping export markets in mind. Of course, आगे तो right? Or if you limit Indian steel companies to the domestic demand, then the capacity will be added only at the rate at which domestic demand is requiring. So that is a challenge. So I think hopefully in the medium to long term this will not be an issue. Short term we will deal with the issue. Okay, you will have to deal with this issue. Quickly sir, इस बार और आगे अगले 2-3 साल में किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे? बिकॉज अब बात हो रही है कि प्राइवेट कंपनीज आर फाइनली पुटिंग इन कैपेक्स, तो क्या लाइनअप है इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एक चीज़ ये है कि while steel companies are always under pressure on the profits they make, but they are also the biggest investors in India today. I think between all the steel companies, over 100,000 crores of investments have been announced, right? At least every year the capex plan of steel companies is about 20,000 crores a year. So I think as of now we will continue to invest because we are completing projects. So we will complete those projects and hopefully there will be more clarity on the long-term policy on exports, and that will help us plan the future growth for the company. We will obviously continue to invest and grow, but the rate at which we grow will need to depend on whether we have access to export markets. Okay, and export पे बात हो रही है, या अगर हम आपके global operations की बात करें, because global environment थोड़ा सा tough हो रहा है, उसका कितना असर आप factor in कर रहे हैं in your finances? So अभी के लिए Europe is still reasonably strong. I think the performance is good, the numbers are good. और दूसरा बात यह है कि India is exporting less steel, that is good for the European market. So from that point of view, the European business benefits from less exports out of India. But overall, yes, there is a concern that how long ये जो अभी जो war चल रहा है between Ukraine and Russia, how long will it continue, and what will that impact be on the overall economic growth in Europe? Exactly. So you're not holding back investments? Not for now. Not for now. All right, sir. Thank you so much. Thank you, Swati. Appreciate it. Thanks. Thanks.